Hi guys, welcome to our Sharjah attraction series. आज हम लोग आए हैं अल-नूर आइलैंड ऑफ शारजाह। वैसे हमें ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आई भी और थोड़ी बहुत नहीं भी। हम आपको सारे पॉइंट्स बता देंगे, उसके बाद आप ही डिसाइड करिएगा whether you like this place or not. So watch the video till the very end and find out whether we got to sit here at this breathtaking sunset point or not. Hi guys, welcome to Saki and Sweet Vlogs. I am Sanket and she is my wife Vikriti. और हम आपको हमारी सारी ट्रैवल जर्नीज में साथ लेके चलते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आपने हमें अपने सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो वो भी अभी कर लीजिए, सो दैट आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलते रहें। यहाँ ऑन द स्पॉट टिकट्स अगर आप लोगे तो इट विल कॉस्ट 35 दिरहम्स फॉर अडल्ट्स एंड 20 फॉर किड्स। बट अगर आप ग्रुपॉन से इसकी टिकट्स ऑनलाइन बुक करोगे तो आपको ये 28 दिरहम्स में मिल जाएगा एंड प्रोमो कोड अप्लाई करने पर 26 में मिल जाएगा। अल-नूर आइलैंड का वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस वाज द बटरफ्लाई हाउस, बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी क्लोज्ड है। बट अभी देखते हैं क्या है अंदर, लेट्स सी। Butterfly House is an award-winning architectural marvel and has thousands of butterflies. Adults and children can learn all about butterflies, their full life cycle, various species and lots more. इसके लिए अलग से टिकट्स लगते हैं, but if you come to Al-Noor Island, then Butterfly House should not be missed. This place is located at the Khalid Lagoon in Sharjah, which is right opposite the Al Majaz waterfront. The nearest bus stop is the King Faisal Road, Jumbo Soni. वैसे अल मजाज वाटरफ्रंट इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इटसेल्फ एंड हमने उसके ऊपर एक अलग से व्लॉग पहले ही बना रखा है, तो आफ्टर वॉचिंग दिस व्लॉग प्लीज डू चेक आउट आवर अल मजाज व्लॉग एज वेल। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये आइलैंड का पूरा मैप एंट्रेंस पे ही है एंड दिस विल हेल्प यू मूव अराउंड एंड प्लान योर विजिट बेटर। ये है यहाँ का अल-नूर कैफे। यहाँ पे आपको कॉफी और स्नैक्स मिल जाएंगे। This absolutely amazing amalgamation of nature and modernity is worth experiencing. There is a trampoline path here and kids and adults both can have fun jumping around enjoying the scenic view. The Bhul Bhulaiya here, the maze garden, and let's see if we can find our way. और यहाँ मंजुलिका भी दिख सकती है। Don't see. अरे यार हम गुम हो जाएंगे। नहीं, दिन में मंजुलिका नहीं आती है। कहाँ निकल रहे हम? बच गया मैं। This was fun. It's just shouting Instagram, and if you guys have not followed us on Instagram, then do it right now and see the reel that we created here. This is our favorite part in the whole island, the swing. This is a sunset point and the view from here is just amazing. Just that you need to get a seat at the swing because it's always packed and it's a little difficult to ask people to move from there. गाइस, अगर आपको स्पॉट नहीं मिल रहा है तो उनको जाके पूछ लीजिए कैसा एक्सपीरियंस था उनका, क्योंकि ना और कोई वे नहीं है उसके लिए।
सनसेट और बीवी के साथ बैठने में बहुत मज़ा आया। आप भी अपनी बीवी को लेके आइए यहाँ पे सनसेट पे बैठने के लिए। Yes guys, this is a perfect place for sunset watching. NOOR Island is home to more than 70,000 plants and trees. Little difficult to visualize, but this is in the middle of a desert. And now let's tell you some great and some not so great things about planning a trip to NOOR Island. The sunset point is the best, we felt. It's a very pretty place for pictures and videos. You will feel so good surrounded by nature and greenery away from the city hustle. We missed the butterfly house, but we're sure that it will be worth it. As the sun goes down, the island comes alive with bright neons and twinkling fairy lights. The bright display of LED lights at night truly makes this place whimsical. We felt the entry ticket prices are high for the offerings they have inside. I mean, it's just a pretty place and not many entertainment options here. So if you're looking for fun and entertainment, then you'll be disappointed. But if you're looking for a peaceful evening surrounded by nature and prettiness, then you'll love it. अगर आपको हमारे साथ ये ब्लॉग देखने में मजा आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। ये वीडियो देखने के बाद वी वुड सजेस्ट कि आप हमारी एक्सप्लोरिंग दुबई प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। हमने बहुत सारी ऑलरेडी व्लॉग्स बना रखी है, जो जगह हम कवर कर चुके हैं वो सारी वीडियोस हमने बना रखी हैं और आपको आपके ट्रिप प्लान करने के लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेंगी। उसमें बहुत सारी टिप्स है कि आपको कैसे पहुंचना है, कहाँ से टिकट बुकिंग करनी है, कैसे पैसे बचाने हैं। तो ऑल ऑफ दोज टिप्स आर ऑन इन दोज व्लॉग्स, सो यू मस्ट चेक दैट आउट। एंड नाउ वील सी यू इन आवर नेक्स्ट व्लॉग। बाय।